क्लास 12th ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सपोर्ट्स एनवायरनमेंट and the role of environment in gamers and supports and how much important the environment is for gamers and supports। अगर हम environment की बात करेंगे, environment की जो definition है that is something like that कि anything जो भी हमारे इर्द गिर्द that surrounds or that environment is called environment। anything that surrounds us or envires us is called environment। but अगर environment देखेंगे it's simply in the sense हम ऐसे भी कह सकते हैं made of all those things which affects our life, activity in some way or other way। किसी भी तरीके से in some way or other way when it affects our activity, when affects our life, that will be called the environment। it's related to some force, it's related to some situation, it's related to effect from inside or outside, it's related to simple phenomena। it's a simple phenomena या complex। simply अगर हम environment की बात करेंगे, environment is the sum of all social, economical, physical, chemical factors which constitutes the surroundings of man who is both creator and modeler of this environment। environment जो होता है refers the sum of conditions which surrounds man to be given a point in space and time। अगर हम environment की बात करेंगे it consists various forms of environment। जैसे कि physical environment होता है, biological environment होता है, social environment होता है। सभी environments को अगर हम अलग अलग करेंगे, जैसे कि physical environment consists of the geographical conditions, the climate conditions, the controlled geographical environment। अगर हम देखेंगे biological environment means वो environment in which it consists plants, animals or we can find it the animals, plants, we can find the man around us। अगर हम देखेंगे social environment, economic environment, social environment consists जाए कि economic, culture, psycho social environment। social environment में ये होता है कि God is a supernatural power या main concern इसका environment का होता है that is related to physical education program। simply there are two types of environment that are much more related to the physical environment, to the physical conditions, to the physical fitness to the physical education to physical culture। environment की ये ज़्यादा importance है क्योंकि simply it's a environment, it's a word which describes the aggregate all the external forces influences the condition, affects the life, nature, behavior, growth and development maturation of living organisms। that will be called the environment। जो भी हमें surround करता, anything that surrounds us, anything that surrounds us, anything that affects affects our activity, life in some way or other way simply it's a force, it's a situation that affects an individual या कोई activity। अगर हम देखेंगे the two main types of environment that are related to physical education या program the physical environment या social environment में वो ये देखिए physical environment में ये होता है कि physical environment first we will look the physical environment is composed of our surroundings such as जो भी हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को कहते हैं इज दैट एनवायरनमेंट व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ आवर सराउंडिंग सच एज जैसे कि रॉक्स होते हैं, हिल्स होते हैं, सॉइल, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, न्यूट्रिशंस, वाटर, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स। सच कंडीशंस जो होती हैं कि सच जो एनवायरनमेंट होता है दैट एनवायरनमेंट हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस and that much importance and that much very importance of this environment is because it includes climate, weather, gravitational force some other allied forces जो होते हैं which affects all living organisms externally। physical environment क्या होता है, it can be classified whether it's artificial environment whether it's a natural environment। artificial environment हो या नेचुरल एनवायरनमेंट हो
जनरली नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी मॉडिफाइड, या जनरली जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो किसी हद तक मॉडिफाइड भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, या एक्सेप्शन केसेस में हम वी कैन मेक सम चेंजेस. बट ऑन द अदर हैंड जो ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, it consists of those elements which are under the control of man sometimes, but sometimes usually we will modify and we can modify them. The unnecessary change in artificial environment can be the natural environment. जो हम चेंज कर सकते हैं दैट विल बी कॉल्ड द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एंड जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं दैट विल बी कॉल्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट. मीन्स इट इज द एनवायरनमेंट विच कैन नॉट बी चेंज. इट मे बी द मैन मेड, इट मे बी द नेचुरल, एंड इट मे बी द change, it may be the environment which we can change to some extent. Number 2, it's called the physical environment. Number 2, it's the social environment. Social environment means environment जो consist करता है culture को, economy को, psychology को, environment, psychological environment, economic environment या cultural environment. All those environment are called the social environment. Social environment अगर हम देखें पहले economic environment. Economic environment means the goods, trades, streets, gardens, domestic animals. ये सब it's the social environment. जो machines होते हैं या stores, manufacturing होते हैं. अगर हम देखेंगे इसी में the another part, एक तो social environment में ये आता है कि द नेचुरल थिंग जो होते हैं इकोनॉमिक डिप्लेशन विप्लेशन एनवायरनमेंट में जो आता है रिलेटेड टू द सोशल एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू द इकोनॉमिक गुड्स, गार्डन्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, मशीन्स एंड अदर मैन्युफैक्चर. जो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, कल्चरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द ट्रेडिशंस, कस्टम्स और लॉज या मॉरल एथिक्स, कोड्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, थॉट्स, पीपल्स ऑफ देयर बिलीफ्स. Social environment affect the psychological makeup of social environment. जो social environment, it has a very much importance in physical education, and this environment affects a lot. Whether it's the religious, whether it's the cultural, whether it's the practice of religion, whether it's the beliefs, yeah, economic crisis. Thank you.